Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I'm going to teach you how you can find oxidation number. Before starting the video, I'm going to tell you, in previous video I taught you how you can find bond order, but sometimes in exams you have to find the bond length. So guys, just note down it that bond length is always inversely proportional to bond order. So now I'm going to tell you the definition of oxidation number. It's a charge assigned to an atom of a molecule or of an ion. हमारा जो मॉलिक्यूल है ये आयन है, इसमें जो एटम आता है उस पर जो भी चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस पे जो चार्ज है वो माइनस है, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी ऑलवेज -2. Now here are some tips so that you can easily find oxidation number. So the first tip is, you can pause the video and note down these tips. So the first tip is, for elements in their elementary state, for example copper, iron, sulfur, sodium, or gases in their elementary state is 0. For example oxygen, hydrogen, nitrogen, fluorine, etc. जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दियर एलिमेंट्री स्टेट, या फिर जितने भी गैसेस हैं इन दियर एलिमेंट्री स्टेट, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा 0 होता है. Now the second tip is, for hydrogen oxidation number is always +1 except CaH2 and NaOH, where their oxidation number is -1. देखो for example हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा आता है +1, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्ट CaH2 एंड NaOH, इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट विल बी -1. नाउ द थर्ड टिप, for oxygen oxidation number is -2 in all compounds except OF2, which is +2, and peroxides, for example H2O2 and Na2O2. जो हमारा ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये मतलब -2 आता है इन ऑल कंपाउंड्स. यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्ट OF2, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 आएगा, एंड पेरोक्साइड्स फॉर एग्जांपल H2O2 एंड Na2O2. एंड इन दोनों का जो पेरोक्साइड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है इट विल बी -1. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फोर्थ टिप. फॉर फ्लोरीन द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑलवेज -1. फ्लोरीन जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा आता है -1 इन ऑल कंपाउंड्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फिफ्थ टिप. For first A group the oxidation number will be +1, and for second A group the oxidation number will be +2. फर्स्ट ए ग्रुप के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर उनमें जितने भी मतलब एलिमेंट्स आते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू +1, एंड फॉर सेकेंड ए ग्रुप उनमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा +2 आता है. नाउ द सिक्स्थ टिप, while finding oxidation number of molecule, it's the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in the molecule. जब भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll tell you that it's the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in the molecule. I'll explain it with the help of an example. For example AB, for example this is a molecule, okay. So what I taught you, it's the algebraic sum. So हमें इसको expand करना है. A plus B equal to 0, and the next example AB minus, and the oxidation number will be A plus B equal to -1. So here फर्स्ट एग्जाम्पल K2Cr2O7, यहाँ पे भी हमें इसको एक्सपेंड करना है लाइक एज एल्जेब्रिक सम, ठीक है. सो आई जस्ट एक्सपेंडेड इट एज
2 into K plus here 2 into Cr plus it will be 7 into O, and it will be equal to 0. 2 into K. So what's the oxidation number of K? I taught you in these tips that the oxidation number of K will be -1. Sorry, +1. Plus, we don't know what's the oxidation number of Cr, so we just assume it as X. Plus 7 into -2, it will be equal to 0. Here 2 into +1, it will be +2 plus 2x. Here it will be plus into minus will be minus. 7 into 2 will be 14 equal to 0. Here 2x equal 14 minus 2 will be 12. X equal to 6. So the oxidation number will be, so oxidation number of chromium will be 6. Now next example. For example, H2SO4. Here we will expand it. 2 into H plus 1 into X plus 4 into O. We don't know the oxidation number of S. So we have to find the oxidation number for sulfur equal to 0. Here, students, what's the oxidation number for hydrogen? It will be +1. +1 into X plus 4. Now what's the oxidation number of oxygen? Here it will be -2 equal to 0. That is 2 plus 1 into X minus 8 equal to 0. 2 plus X minus 8 equals 0. 2 plus X equal to 8. X equal to 8 minus 2, and it's also 6. So the oxidation number of S will be 6. That's it. Now next example. The next example, KMNO4. So here it's nothing but 1 into K plus here it's nothing, here also it's nothing but 1 into, we don't know the oxidation number of Mn, so we can write it as, assume it as X plus 4 into oxygen, it will be 0. Now what's the oxidation number of potassium? It's +1 plus X plus what's the oxidation number of oxygen? It's -2. Here it's +1 plus X minus 8 equals 0. +1 plus X equal to 8. Here it's 8 minus 1 equals 7. So the oxidation number of Mn will be 7. Now this is test yourself question. Just
this is the question. H3PO4, you have to find their oxidation number, and you can write your answer in the comment section. Thanks for watching.